दीपिका जी के साथ डांस भी कर रहा हूँ, ऐसा नहीं नहीं, ऐसा वो कुछ नहीं है। मुझे एक्साइट करना चाहिए, डर लगना चाहिए, नींद थोड़ी हराम हो जानी चाहिए, उस किस्म का काम हो तो मजा आए। कुछ लोग रिएक्ट नहीं करते, मैं थोड़ा सा उस हिसाब में पागल हूँ कि मैं रिएक्ट कर देता हूँ, कभी कभी तीखा रिएक्ट कर देता हूँ, लेकिन अभी मैंने थोड़ा डाइल्यूट कर दिया है, अभी मैं नहीं करता हूँ ज़्यादा। बट वो अवेयरनेस तो रखनी पड़ेगी आपको, कहीं ना कहीं पे उसका जुड़ा हुआ रहता है, उसकी वांट्स टू कमेंट, और ट्विटर जैसा मिल जाए तो आपको प्यूकिंग पॉट, तो आप करते रहते हैं। Like, so it's whatever story. Like, I mean, that is what we've been doing from Dil Chahta Hai till now. I might do a Fukre, we'll do a Dawn, we'll do a Tufan, we'll do a Made in Heaven, and you will talk of whatever, or will be a part of Sharmaji Namkeen. You know, as long as you identify, you relate to it, and you feel this is something I want to say out there and put my voice behind it, is you should do it. Ranbir was telling me this, that when he was in hospital going through, his only constant thing was, I want to get out, finish this treatment and go and finish my film. Yeah. It's amazing. You know, so that's how we all feel. Everyone, I'm Rajani and welcome to Speak Easy. My guests today come with a very special film. ये film tribute देता है हिंदी सिनेमा के एक legendary actor को, जिन्हें हम काफ़ी मिस करते हैं. I'm talking about, of course, the team of Sharmaji Namkeen. Tell me, did you have conversations about how are you going to make this work? Because it was important, you know, the tribute and the film and all of it. I mean, see, there was one thing which all of us, Hitesh, Abhishek, Hani, Farhan, me, were very clear when this happened, and we knew we had almost 45% of the film still. That we waited for quite a few months to decide about how to do at one point, whether to get somebody in with prosthetics, and you know, to do it, because there was one thing was very clear, that we were not going to reshoot the film. So we were, and then Correct. Fortunately you find a really fine, talented actor like Paresh, who comes in and agrees to be a part of it and does it. He reads the script, he looks at it, and he knows, and the idea, obviously let him tell you about his process, about what he decided to do with the part, because I've seen the film, so I don't want to tell you from my point of view, it's better for him. But I feel that was one thing we were very clear on, all of us, that there was no way it's not going to be complete. What is the process and how best? But I think we were really fortunate, like I said, to have Paresh ji in it, to come in. And when you watch it, like you said, you've only seen the trailer. When you watch the film, it will take you not more than 5 to 10 minutes to just find it, because they become one. Any people who've seen it while performing the rest of the scenes, I remember some of the co-actors tell me, like, for them, they were just with Sharmaji. I spoke to some of the actors even after that. And they did, I mean, obviously everybody misses Rishi ji and they knew it is Paresh who's doing it. But I think they just became one. Both those actors became one to bring that character to life. And that's what you'll see on screen. How do you look at it? कि मैं खुद को इस ढांचे में कैसे डालूंगा? क्या सोचना पड़ा कि वो seamless था? And my second question is, relevant रहना कहते हैं actors के लिए मुश्किल रहता है, but you, Amit ji, all have proved that that's not a problem. Tell me how that works out for you. So पहले जब मुझे अप्रोच किया गया, मैं मिला, भैया ये ऐसा ऐसा है, तो पहले मैं आई कुड नॉट बिलीव, ये अरे ऐसे थोड़ी करेंगे, हाउ इज इट पॉसिबल? बिल्कुल. तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, एक तो ट्रिब्यूट देनी है आपको, एक फिल्म कंप्लीट करनी है, इतनी अच्छी कहानी है जो ये फिल्म, इसको कंप्लीट करना है. ऋषि जी जैसे एक्टर है, उनको ट्रिब्यूट भी दे सकते हैं आप, और एज एन एक्टर ये चैलेंजिंग भी है, और इतनी बेहतरीन स्क्रिप्ट है, तो आपके खाते में एक अच्छी फिल्म भी लिखी जाएगी. ये भी ग्रीड थी, और ये बिल्कुल ये मुनाफा वाली बात थी, तो इसको तो मैं ना कर ही नहीं करने ही वाला नहीं था. और दूसरी बात ये थी कि अभी आप उनके जूते में पैर डाल रहे हैं, तो वो सोच रहा था कि कैरिकेचरिश ना करो, उनके मिमिक्री ना करो, उनका जो है जो कॉन्फ्लिक्ट है कैरेक्टर की, उसको पकड़ के चलो, और डायरेक्टर के साथ आप बैठे हो, और आप आधा सर दर्द तो आपका तब गायब हो जाता है व्हेन यू रिलेट टू द स्क्रिप्ट, व्हेन यू आइडेंटिफाई विद द स्क्रिप्ट, तो वो आसान हो जाता है. हाँ, एक ख्याल रखना था, ये कैरिकेचरिश ना हो जाए. हाँ, क्योंकि जो ओवरऑल टोन जो है फिल्म का सटल है, नॉट इनटू योर फेस. और जैसा अभिषेक भाई ने बताया, वो प्रीची नहीं है, वो है अंडर करंट, जो भी कुछ आपको जो भी लूटना है लूट लीजिए वो रस, लेकिन ऊपर से नहीं है, तो वो बरकरार रखना था. इसकी ऑनेस्टी, उसकी जो एक डिग्निटी थी स्क्रिप्ट की, कैरेक्टर की, वो बरकरार रखनी थी. बिल्कुल.
मैं ना प्रोड्यूसर हूँ, ना मैं राइटर हूँ, ना मैं डायरेक्टर हूँ। जो मेरे पल्ले आता है उसको निभाने की कोशिश करता हूँ। और मेरी जो एज एन एक्टर जो मेरी ट्रेनिंग है मेरी थिएटर में हो जाती है। मैं अपने आप को लिमिटेड इकोनॉमी के अंदर अलग अलग रोल करके अपने आप को संवार सकता हूँ। तो वेन एवर द चांस कम्स तो मैं एक थोड़ा उसको निभाने की कोशिश करता हूँ। दैट्स इट। Abhishek, you know, the films that you've been associated with have been extremely real and honest to in what you believe in. Your association with the film, I'm sure, also reflects what you believe in a little bit. Am I correct or am I assuming this? No, absolutely true. I mean, the only difference between this and the other films that I've made is nobody dies in this one. I was just going to go with that, thankfully. गोलियां नहीं बरस रही है ना कहीं पे, Abhishek? But yes, I mean, it was I mean, I'm lucky to be a part of this film, and I'm thankful to Ritesh, you know, to have met us and, you know, given us the opportunity with this script. And the moment we read the script, I mean, we were on board with it because, I mean, apart from the fact that it is an incredibly funny, incredibly moving story, it also has you know, it makes very good aesthetic choices of a very high standard. And that's something that I would like to be a part of, you know. So there was no questions when the script came to us, and it's been a marvelous journey. It's been a long one. It's been a journey of patience and resilience, but it's been a marvelous journey, and I'm really thankful to Ritesh for this. Wonderful. Suhail, आपके Instagram का bio में लिखा हुआ है, that actor from Hotel Mumbai and Urta Punjab. Yes. I'm sure your Instagram bio will soon change, wouldn't it, Suhail? हाँ, मतलब मैं उस पर सिर्फ dessert shop लिख दूँगा. It's like I've been lucky with the kind of roles that I've like, the kind of small things that I've done. Like I still have to do a lot. So everything has been very unique. Every character has been very unique from one another. So be it Urta Punjab, be it Hotel Mumbai में terrorist, यहाँ पे एक अच्छा बेटा. तो ये बस होता है. Like I don't think, जैसे परेश सर ने बोला कि आपको सही डायरेक्टर, सही राइटर, सही स्क्रिप्ट मिलती है तब आप करते हो. I don't make that choice. I don't think I have that. Like I'm that smart कि मैं बैठ के सोचूंगा नहीं ये रोल करके मैं वहाँ नहीं पहुँच पाऊँगा. ऐसा नहीं. I just try to do everything with very much honesty. And this is I went to FTI to study acting. I came here to work, and now I'm working. So I'm living my dream. I don't have any set के ऐसा कोई रोल करके मैं कहीं पहुँच जाऊँ. So like जो आ रहा है मैं अच्छी honesty से कर रहा हूँ और वो अच्छा हो रहा है. I have a follow-up question for you. जी. When you are working with such talent, क्या आप ऐसा एक्टर हो जो खुद को डिटैच कर सकता है about the aura of the people that you're working with and not get intimidated, or does that not affect you at all? Like नहीं, पहले 2 दिन तो होता है. होता है. आपको आवाज़, क्योंकि आप भी थोड़ा समझ रहे होते हो. इट्स और वो कोई भी को एक्टर होता है आपके साथ, तो वो होता है. आपको थोड़ा समझ में आता है कि अच्छा इनका क्या प्रोसेस है, कि कैसे ये बोल रहे हैं चीज़ें, आपको कैसे लाइक हाउ यू हैव टू लिसन, हाउ इज देयर लिसनिंग, सो यू अट्यून योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू दैट. तो वो 1-2 दिन आपको थोड़ी आना होता है ट्यूनिंग में. और ये मैंने हितेश सर को भी स्टार्टिंग में बोला था कि पहले दिन इजी सीन रखना. तो इजी सीन था. हाँ, पहला दिन इजी सीन था. उन्होंने इसलिए रखा था ताकि सब लोग एक दूसरे को समझ जाएं. और ये मतलब इट्स द बेसिक ग्राइंड दैट हैपेंस. When you have to censor yourself because of, you know, the opinions on social media or otherwise, does it bother you, or are you now okay with it and you know it's a part and parcel of, you know, the job that you've taken? How is that? You know, how does that work? So we empower our creators, and I think everything with us starts, you know, with story, consumer, creator, and we work backwards from there. Sure. And I believe in everything that we've done. We've empowered our creators to take bold decisions on the narratives they want to tell, the stories they want to speak of, the characters they want to bring to life. And I think we just take those stories not just to the world, but also, you know, to towns and cities and, you know, very deep in India. I think, you know, you know, and I think, you know, we let our creators tell the stories they want to tell. Which is great. But in this business of in Hindi cinema, बहुत सारे actors जिनसे मैं और ये मिलती हूँ creators, not just actors, उनको लगता है कि पता नहीं इस business में हम we don't want to retire as such. We want to be associated with films all the time. Now that I have so many people from this
this is how you think? I mean, fortunately, we are all in our mid-20s, so we've not reached that. That you is know, to true. come That to is that absolutely. That is point true. of- we are very far away from that. What are you thinking? I agree. Absolutely. Ji. Every other business, I feel, does not have the challenge, does not have the same amount of excitement or that eagerness, anxiety, whatever emotion you feel. Because I think every film, show, whatever we may do, right? You're telling a story, you do feel that you are a certain way on that Friday or Wednesday or Thursday before it opens up. And whatever experience you have. And I think that's very fortunate because it's inherently the nature of this business, right? None of us can ever look at it and say, because there is a certain unpredictability to it. You know that you may have the best character, played by the best actor, the best script, the best director. Maybe it won't touch somebody and maybe it will, maybe emotionally it will connect, it might not, and you always have that, right? So that is there. So I think that keeps us going. You want to concentrate. So you know that I wake up in the morning today going to thinking about this film, I'm shooting for this, I'm going there, and then once that is done and it's released, you look forward to the next. So I don't think for us that matters. As long as you have that same hunger, that energy, you'll want to do it, and I think you are seeing it. Like there are filmmakers who are in their 70s making Absolutely. films. There are actors who are at that age playing characters. So I think, I don't know whether any of us, and if we feel like, we'll be like, it's okay, I'll slow down. Maybe I won't do 5 films a year, I'll do 1. But I don't think you want to go away there, from this, right? You want to be looking forward to it. And I think you should, I would like to work till my last day. I would like to There you are. be exactly like that. Like exactly what happened with Rishi sir. I think he was literally like Ranbir was telling me this, that when he was in hospital going to, his only constant thing was, I want to get out, finish this treatment and go and finish my film. Yeah. It's amazing. You know, so that's how we all feel. But एज ए क्रिएटिव पर्सन नेवर रिटायर्स, है ना? उनका दिमाग कभी चलते ही रहता है. बात आती है जो फिजिकल एस्पेक्ट की, तो भाई अभी चलो फिजिकली अगर आप कर सकते हो तो करोगे, जी. अगर नहीं कर सकते हो तो क्या करोगे? तो बंदा स्क्रीन प्ले लिखेगा या ड्रामा लिखेगा. मैंने सोच के रखा है कि मैं एडिटिंग सीखनी है मुझे. आप सोचा है? एडिटिंग इज वेरी फैसिनेटिंग, वेरी वेरी फैसिनेटिंग. स्क्रिप्ट राइटिंग एंड एडिटिंग, ये 2 पहलू ऐसे है कि वहाँ पे बिल्कुल आप मजे ले सकते हो. ये वो भी प्योरेस्ट फॉर्म है. जी. योर आइडिया इज एब्सोल्युटली प्योर एंड वर्जिन. जी. और ये भी आप कर सकते हो, इसके साथ जादू कर सकते हो. राइटिंग तो हम लोग करते रहते हैं, लेकिन फिर 6 महीने के बाद पढ़ते फिर फाड़ पर एज ए वो करते रहते हो. एज ए मैं अपनी मस्ती के लिए करता हूँ. कुछ चीज़ें अच्छी लगती है तो चलो एज एंड व्हेन जब टाइम आएगा तब करेंगे. जी. बट एक्टर एज एन एक्टर क्या होता है कि ये अभी तो बातें समझ में आने लगी है, अभी तो दिमाग समझने लगा है, अभी तो सब टेक्स्ट भी समझ में आने लगी है. उस वक्त हम उन्हें दुकान बंद कर दे तो खाली फिजिकली आपको फिट होना चाहिए, बट दैट्स इट. जी. पर जी मैंने रेलेवेंस वाला सवाल इसलिए किया था, मुझे लगता है कि आप सोशल मीडिया में भी एक्टिव है, तो आप दौर के साथ भी चलते हैं अलॉन्ग विथ योर क्राफ्ट, और वो मुझे बहुत ही फैसिनेटिंग लगता है. मैं समझता हूँ कि आर्टिस्ट जिस समाज से आता है, जहाँ पे जिंदा है, जी. जिस दुनिया में जिंदा है, उसके साथ तो लेन देन होती ही रहती है, दिमाग तो चलता ही रहता है. यू हैव टू. अब कुछ लोग रिएक्ट नहीं करते, मैं थोड़ा सा उसके साथ में पागल हूँ कि मैं रिएक्ट कर देता हूँ, कभी कभी तीखा रिएक्ट कर देता हूँ, लेकिन अभी मैंने थोड़ा डाइल्यूट कर दिया है. अभी मैं नहीं करता हूँ ज़्यादा, बट वो अवेयरनेस तो रखनी पड़ेगी आपको, उसमें कोई बुराई नहीं है. ऑफकोर्स मैं पहले पॉलिटिकली एक्टिव था, अभी मैं उसमें आउट हूँ, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ जो आदमी पेपर पढ़ता है, जो आदमी न्यूज़ चैनल देखता है, पॉलिटिकली ही है, कहीं ना कहीं पे उसका जुड़ा हुआ रहता है. ही वांट्स टू कमेंट, और ट्विटर जैसा मिल जाए तो आपको प्यूकिंग पॉट, तो आप करते रहते हैं. दिस इज वन क्वालिटी यू हैड सिमिलर विद ऋषि जी एज वेल. ऋषि जी भी दिल खोल के ये आई थिंक लिखते थे. हाँ, नहीं अगर बोलना है तो खुल के बोलो. जी. फिर क्या टेंटेटिव रहना, रिलक्टेंट रहना, जो बोलना है खुल के बोलो. बिल्कुल. आई थिंक एक्सेल ने भी आई थिंक has sort of been very inclusive in their stories, and whether it's Made in Heaven, whether it's anything that you'll pick up, I see the understanding and the kind of awareness that you put in. At the end of the day, we all like telling stories, right? We all want to be saying something, and you fortunately you're in a position where you can bring certain stuff to the forefront without influencing people's decision. This is what I feel about it, but not sending them back. So I'm talking of certain issues like you bring to the forefront through your films. But the minute you do it trying to change people's opinion, it will not connect. The minute you try to make it preachy, it will not connect. Yeah. You have to say it as you believe in it,
stay honest, state what you think about it, and let people take away from what they want to through it, you know, through that. And that's what I think is important. If you stay true to it and you believe in what you're saying, it'll always resonate with people. Like, so it's whatever story. Like, I mean, that is what we've been doing from Dil Chahta Hai till now. I might do a Fukre, we'll do a Dawn, we'll do a Tufan, we'll do a Made in Heaven, and you will talk of whatever, or will be a part of Sharmaji Namkeen, you know. As long as you identify, you relate to it, and you feel this is something I want to say out there and put my voice behind it, is you should do it. So I think it comes with any story. So we don't, like I said, there are so many films which have been huge hits at the box office, but they still have a subtle message in it. Yeah. They do, you will take away something from it. मुझे ये जानना है कि एज अगर चूली बार नहीं है, आपको ऐसा कौन सा वो रोल है या कैटेगरी है, कुछ भी है, जो अभी तक नहीं मिला है, जो कभी आपको लगा यार मुझे कभी नहीं ऑफर करते इस तरह का कुछ चीज़, वो क्या है? और मैं जानना चाहती हूँ। मैंने ऐसा कभी सोचा कभी नहीं, कभी नहीं। मुझे उस किस्म का रोल चाहिए जो मैं जवाब बार बार दे चुका हूँ कि जो मुझे चैलेंज करे, मुझे डर लगे, ये मैं करूँगा तो भैया गई अपनी इज्जत, फिर पानी में गई, खुल जाओगे, ढक्कन खुल जाएगा। बट वही डर मुझे मोटिवेट करे कि करना है, तो मुझे ऐसा उसी किस्म का रोल एक्साइट करते, वरना वो नहीं कि मैं इसमें स्कीइंग भी करूँ, उस किस्म का नहीं है। हाँ कि मैं दीपिका जी के साथ डांस भी कर रहा हूँ, ऐसा नहीं, ऐसा वो कुछ नहीं है। मुझे एक्साइट करना चाहिए, डर लगना चाहिए, नींद थोड़ी हराम हो जानी चाहिए, उस किस्म का काम हो तो मजा आए। एंड आपको राइटर डायरेक्टर आपके अच्छे हो यार, आपको रोल अच्छा मिले, डायरेक्टर अच्छा नहीं है, गई भैंस पानी में। थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया बात करके। Thank you so much. Thank you. Thank you. थैंक यू।